गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में आप सबको स्वागत है। नमस्कारम, वणक्कम एंड सत श्री अकाल। आज हम चाइना का मिलिट्री जो स्पेस के अंदर वो अपना कदम ले रहा है और स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये हम बात करेंगे आज चेन्नई सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज के कुछ रिसर्च इंटर्न्स के साथ, राइट। और ये एक पैनल डिस्कशन टाइप होगा। और ये पैनल डिस्कशन में हमारे साथ तीन युवक, हमारे जो भविष्य है, देश के भविष्य, द फ्यूचर ऑफ अवर नेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। हाय, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल फाइन? Hello, sir. Yes, Hello, sir. sir. Yeah, Yes, sir. yeah, great. Awesome. That's great. So we have three young researchers who are researching about China, right? Akshaya is researching about regenerative AI in China. Am I right, Akshaya? It's generative AI in China. Yes. Yeah, in China. And Gautam is researching about military modernization in China in Flame University in Pune, right? So how far have you come into this research? Pretty well. So I'd say I have all the resources I need. I've gathered the information. It's just putting the points across. Yeah. Yeah, good. And Elizabeth, what are you doing in Stella Maris College and in Chennai Center for China Studies? In Stella Maris, I'm doing my Master of Arts in International Studies. And at C3S, I'm doing a research paper on the sharp eye surveillance system in China and how it affects the yoga community. Oh, great. So, Vian, आपने देख लिया कि ये तीन युवक हैं हमारे साथ जो अलग अलग चीज चाइना के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि जो इनका जो फ्रेश माइंड्स है वो आपके सामने लेके आए और आज चाइना का स्पेस प्रोग्राम के ऊपर हम बात करें और किस तरीके से वो चाइना का स्पेस प्रोग्राम को मिलिटराइज कर रहे हैं। ये तीन युवक हमारे अलग अलग हिस्सों के ऊपर जो चाइना का स्पेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अक्षय बात करेगी चाइना का स्पेस प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद गौतम राव बोलेगा ऑन किस तरीके से चाइना स्पेस को मिलिटराइज कर रहा है। और लास्ट में एलिजाबेथ बोलेंगे ये ऑन इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइनास प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम, राइट। और इंडिया में क्या हो रहा है स्पेस के बारे में। और उसके बाद मैं अपना जल्दीफाई तो है ही, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं with Akshay. Akshay, sir. all your. Thank you, sir. So, good evening to one and all joining us today virtually. I am Akshaya, a research intern from the Chennai Center for China Studies, and I will be presenting on China's space program, thereby setting the tone for today's panel discussion. Next slide, sir. Yeah. So I will be taking you through China's space program, where we will look at some of their key milestones, their space initiatives, their space capabilities, and also their future plans. With the successful, news about how they've completed their Shenzhou 15 mission, as well as the glitch-free launch of their Shenzhou 16 mission, it becomes very imperative for us to look at China's ambitious space program. Without further ado, I will dive straight into my presentation. So before we start, I would like to establish that since 1993, the nodal organization which has been responsible for China's space program is the China National Space Administration, the CNSA. The Ministry of Aerospace Industry was previously in charge of the space program, but then it was dissolved in 1993 as part of their, governmental reforms and modernization efforts. So now we look at some key moments in history that were very defining for China's space program. So the space program began to take root in the 1950s with aid from the erstwhile Soviet Union in terms of technical know-how, finances, and resources. But it wasn't until the 1st of April 1970 that China was able to launch its very first satellite. Named Dongfang Hong 1, which when translated reads, "The East is Red," its launch into orbit
made China enter into the realm of space for the very first time, and it also set the stage for their future accomplishments. But because of mounting pressure from Mao Zedong's Cultural Revolution during the 1970s, China wasn't able to focus much of its resources and experts on the development of manned space mission. However, it was eventually able to launch its first recoverable reconnaissance satellite named Fanhui Shi Weixing in 1975. Since the beginning of the 21st century, owing to the kind of rapid economic growth that China has witnessed, China's ascent into space exploration became much more evident thanks to their technological advancements in their space program. Next slide, sir. So first we look at their launch vehicle. So China has made significant advancements in space technology, particularly in launch vehicle technology, and their LV is known as Changzheng. So this is a series of rockets, which includes the Long March 5 and Long March 6, both of which have time and again demonstrated increased payload capacity and have also successfully launched various missions. Their success to failure ratio is very impeccable. So in terms of their payloads capacity, the Chinese Long March 5 is capable of carrying nearly 5 times as much as payload as India's GSLV Mk3. So this is something that gives China a technical advantage in terms of deploying more probes and satellites with ease in a single flight. Next slide, sir. या जो आप बता रहे हो इसका मतलब ये है कि चाइना का जो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और उनका रॉकेट कैपेबिलिटी है हम एक एक उनका रॉकेट जो जीएसएलवी इक्विवेलेंट है वो 5 गुना सैटेलाइट या पेलोड ऊपर बता डिलीवर कर सकता है और ये एक बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ओवरऑल कैपेबिलिटी अगर आपके पास लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है तो आपको स्पेस को इस्तेमाल करना और डिप्लॉय करना सैटेलाइट्स को और सैटेलाइट स्टेशंस को डिप्लॉय करना बहुत आसान हो जाएगा ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इन्होंने अभी बताया है राइट Yes, sir. So now we'll look at their manned spaceflight program. So Shenzhou is a spacecraft which was developed and operated completely by China to support its manned spaceflight program. So in 2003, this Shenzhou it received a very significant breakthrough. So what they did was the successful launch of Shenzhou 5, which was its first manned mission, made China the third country to independently send human beings to space. So following that, in 2008, the Shenzhou 7 mission. During this mission, what happened was China was able to accomplish another feat. So its astronaut Fei Junlong became the first Chinese to perform a spacewalk. So this Shenzhou spacecraft, in short, is used for the development of their manned spaceflight missions with docking, rendezvous, and extravehicular capabilities. And it is also used to transport presently cargo and crew to its space station. And it is also expected to be used in the future for their lunar explorations. Next slide, sir. तो आप बड़ा क्लियरली देख सकते हो कि 20 साल पहले इन्होंने एक मैन्ड स्पेस फ्लाइट किया था स्पेस वॉक भी कर लिया और इनका एक स्पेस स्टेशन भी इन्होंने स्थापित कर लिया टियांगोंग और इसका मतलब कि काफी एडवांस स्टेज में है इन स्पेस एक्सप्लोरेशन और खास बात यह है कि आज के दिन चाइना इज बेटिंग बिग ऑन स्पेस वो it's betting big on space because it has developed the capability to bet big on space. That's the important point, right? Okay. Yes, sir. So now we look at their satellites. So according to data from the Union of Concerned Scientists, as of April 2023, China has 541 satellites in orbit. So among them, in terms of classification, 431 are in the low Earth orbit (LEO), and 29 are in the MEO medium Earth orbit, 78 in the geostationary Earth orbit, and 3 in the elliptical orbit. So the four main areas of application of these Chinese satellites are remote sensing, which is nothing but Earth observation for meteorological or imaging purposes, navigational purposes, telecommunications, navigation, and science exploration.
So many of the satellites which are operated by China are actually part of their Beidou navigation satellite system, which is China's equivalent or alternative to the US global positioning system, which we commonly know as GPS. And it is also an alternative to the Russian GLONASS and the European Galileo systems. So, as of June 2020, China successfully managed to deploy its final third generation of Beidou satellites, and it completed the constellation, thereby attaining global coverage and also precise navigational capabilities. So, other notable satellites include Yaogan and Goafen. So, since China's space program insists on a dual use approach, which means certain satellites, certain technologies can serve both military as well as civilian purposes. So, to China, this integration provides advantages such as cost effectiveness, shared infrastructure, and it also, on the whole, enhances their national security. So, for example, remote sensing satellites like Yaogan and Gofen have applications in both military reconnaissance and civilian Earth observation. So, they contribute to both disaster response, resource management, and infrastructure planning, and are also very integral towards gathering intel from sensitive areas. So the Yaogan series, for example, the series of spy satellites, they allow constant surveillance across the South China Sea, the Western Pacific, and the Indian Ocean. Next slide, sir. राइट। और खास करके ये देखने वाली बात है कि चाइना के पास अ, तकरीबन 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। और मेन चीज जो है ये जिनके जो 78 जो जियो स्टेशनरी अर्थ सैटेलाइट्स हैं वो इनका टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम देते हैं और इनका नेटवर्किंग सिस्टम को बढ़ाते हैं। ये जो 431 ये 431 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं जो तकरीबन 300 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के पृथ्वी के ऊपर जो मंडराते हैं वो है लो अर्थ ऑर्बिट बैंड। इसमें इनका 431 है, वो कम है। अगर आपको तुलना करेंगे तो सिर्फ एलोन मस्क, राइट, उसका जो स्टारलिंक है उसी के पास 1200 के ज्यादा एलियोस हैं, इनकी चाइना के 3 गुना। अगर आप इसको आप टोटल यूएसए के पास जितने हैं और जोड़ दोगे तो यूएसए के पास ही तकरीबन 2000 के सैटेलाइट्स हैं ओवरऑल, क्योंकि यूएसए के डीओडी, उनका स्पेस प्रोग्राम, एलॉन मस्क, ये सब मिल मिला के उनके पास 2000 है। पर ये बदली होने वाला है कुछ, राइट। और इनका जो स्पेस सेगमेंट में स्पेस एक्सप्लोरेशन काफी सेटल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन है, राइट। या कैरी ऑन विद योर लूनर प्रोग्राम। Yes, sir. Sorry. Previous slides. Yes, sir. So now we look at the Lunar program. So the Chinese Lunar Exploration Program of the CNSA, which is also known as the Chang'e project, consists of an ongoing series of robotic moon missions, which involves orbiting, landing, and sample return from the moon. So a breakthrough event occurred on 3rd January 2019 when the CNSA managed to successfully soft land the probe Chang'e 4 on the far side of the moon, which is the side which we cannot see from Earth. So this was a first for the world. So while its remarkable scientific success was lauded in the scientific community, the landing also sparked several concerns in Washington that China might possibly use the remote lunar dark side to conceal anti-satellite weapons to counter the US and its allies' space capabilities. But notwithstanding such assumptions, the CNSA, has goals to, land its astronauts on the moon before 2030 and to build an international lunar research station along with Russia near the south pole of the, moon. So a manned lunar landing would be a major milestone for China because the world has not seen landing on the moon since the United States Apollo missions in the 1960s and 70s. So it could be a very significant achievement for China in its burgeoning geopolitical competition with the United States in space. Some of the CNSA's goals also include exploring and training on how to leave the Earth homeland, establish a permanent, study station for research, scientific research, and all that, and also to set up sufficient extraterrestrial homeland. So the implementation of the Chang'e project
will eventually improve knowledge about the moon and also investigate the prospects for lunar mining of energy resources, particularly of helium-3. So helium-3 is an isotope of helium, and it is considered to be a very good alternative source of fuel. So it could also be used for nuclear weapons. And as per scientific inferences so far, it appears to be concentrated more on the dark side of the moon, on the far side of the moon. So since it could possibly provide enormous amount of energy through nuclear fusion, China seeks to mine He3 to meet its on Earth energy demands. Next slide. देखिए, बात यह है कि आजकल जो हमारे पास एनर्जी का डेफिशिएंसी है, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हम ढूंढ रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो हीलियम 3 के साथ होता है, हीलियम और ड्यूटेरियम के साथ होता है, वो अ, उसके जरिए फ्यूजन एनर्जी क्या है वो बनाना चाहते हैं। और ये फ्यूजन एनर्जी के सर्च में 3-4 देश हैं जो अभी क्षमता रखते हैं। एक है यूएसए, दूसरा ऑफकोर्स रशिया के पास है ये क्षमता, तीसरा चाइना और चौथा हमारा। और इसके लिए हमें डार्क साइड ऑफ द मून में जाके उतरना पड़ेगा। डार्क साइड ऑफ द मून में क्यों उतरना पड़ेगा? तो इसलिए उतरना पड़ेगा क्योंकि डार्क साइड ऑफ द मून में ये माना जाता है कि वहां पानी पाया जाएगा, राइट? इसीलिए हमारा जो चंद्रयान भी डार्क साइड ऑफ द मून के ऊपर हमने लैंडिंग करना किया, हमारा फेल हो गया, पर फेल है तो स्पेस इसमें होता ही है, राइट? और अमेरिका भी वहां डार्क साइड ऑफ द मून में वो स्पेस मिशन लैंड करना चाहते हैं। क्यों? दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पानी मिलता है, पानी मिलने का अंदेशा है, राइट? पानी किस लिए चाहिए? पानी बोलते हैं कि वाटर इज द ऑयल ऑफ स्पेस, ठीक है? पानी लेके उसको फ्यूल सेल्स बना के उसको हाइड्रोलाइज करके फ्यूल सेल्स में इस्तेमाल करके फिर आपको एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी के साथ सब लोग मंगल में जाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा मंगलयान का जो प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट है, वो आगे एलिजाबेथ कवर करेंगे इसके ऊपर। मंगल में जाना चाहते हैं। मंगल में क्यों जाना चाहते हैं? हीलियम 3 जो है मंगल में प्राप्त है, और यही मंगल में जो रोवर्स गए हैं ये बताते हैं। अगर हम हीलियम 3 वहां से लेके आ सकते हैं, ड्यूटेरियम भी वहां से लेके आ सकते हैं काफी तादाद में, काफी मात्रा में, तो हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर हमारा जो एनर्जी का प्रॉब्लम है आइंदा आगे जाके खत्म हो जाएगा। ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लूनर प्रोग्राम किसी देश का। या Yes, so with regards to China's Mars exploration mission, Tianwen 1 was inserted into Mars's orbit in February 2021, and it captured global interest immediately. So this, Tianwen 1, it consisted of an orbiter, a lander, and a rover, with the rover successfully landing and conducting research on Mars's surface in May 2021. So apart from the obvious reason, that a successful March exploration would raise the country's esteem and prestige on the global level, Chinese space scientists have expressed plans to build a permanent settlements on Mars and also to extract its resources, as Sir had previously mentioned, like water and as well as helium-3 beneath its surface. So China also aims to send its first manned mission to Mars in 2033, and also to send an uncrewed mission before the manned mission to collect samples by 2030. Next slide, sir. या So finally, one of China's biggest achievements when it comes to their space program is the development of its very own space station. So in November 2022, China finished the construction of the Tiangong space station, which it had begun building prior, like 18 months ago. So in April 2021, the space station currently has three modules, namely Tianhe, which is the core module, or the one which is in the center, Wenxian, a module for biological research, and Mengxian, a module for free fall or zero gravity experiments which cannot be conducted on Earth. So this space station can support 3 astronauts or up to 6 people during crew rotations. China, through this space station, intends to have a permanent presence at least for a whole decade. So, if the International Space Station of NASA retires in 2030,
Tiangong will be the sole in orbit outpost for any sort of scientific research in the Earth's low orbit. So, as of now, this space station is said to have no military uses, and they claim that it is a purely scientific endeavor. So while I was reading, I got to know that David Burback, a national security affairs expert at the Naval War College in Newport, Rhode Island, he said that it would be, rather counterintuitive for China to have some sort of a grappling arm on the space station and to maneuver the space station to grab adversary satellites. Instead, they could probably develop a more, small, stealthy satellite which has such capabilities to thwart, adversary satellites. Next slide, sir. Yeah, So yeah, its ongoing missions to the moon, the establishment of a space station, and the successful exploration of the Mars demonstrate China's commitment towards pushing the sort of boundaries not just in human knowledge but as well as space exploration and technological innovation. And this commitment also demonstrates how far their space program has evolved and matured throughout the decades. So, with such goals in mind, countries around the world, and especially China, should definitely monitor China's space program and do their due diligence in the realm of space. Thank you for your attention. yeah, yeah. uh, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कवर किया कि चाइना का स्पेस प्रोग्राम किस तरीके से बढ़ता आया है और उनका आज के दिन बहुत तगड़ा स्पेस प्रोग्राम है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, चाइना इज बिटिंग बिग ऑन स्पेस। ये मैं बाकी इसमें भी बता चुका हूँ। और स्पेस जो है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है, वो मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और पीसफुल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और खास करके क्या है कि स्पेस जो टेक्नोलॉजी स्पेस में जो हम बनाते हैं वो और हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्पेस इज द टफेस्ट फ्रंटियर। और जो टेक्नोलॉजी वहां हम इफ यू कैन मेक टेक्नोलॉजी देयर, that technology has myriad uses, whether it's in materials, it's in energy, whether it's in propulsion and anything, right? Okay, so इसके साथ अभी we will see, Gautam will take us through how China has militarized space and what it's doing. Yeah, carry on, Gautam. Thank you, sir. So, good evening to everyone present. Now that we have some insight into how China's space program came to be and it functions, I shall be speaking on how China has militarized space and its space program. Next slide, sir. So, we must first ask ourselves why militarize space? Space को क्यों militarize कर रहे हैं वो लोग? Space is a tough medium to operate in and requires vast amounts of investment and development of technology that is reliable and long-lasting enough to be sent into orbit. It is a risky affair that may not always provide results. However, the rewards are equally beneficial as they have various applications and effects on our daily lives. Navigation/GPS systems, communication systems, meteorological systems, and more would be ineffective without infrastructure in space. Similarly, when it comes to military strategy, China views space as a new strategic high ground. So the vice chairman of the Central Military Commission of China in 2009 said that space is the new commanding height for international strategic competition and means of having control of the ground, ocean, and electromagnetic space, which also means having the strategic initiative in one's hand. Basically, militarizing space is a key contributor to the PLA strategy of relying on information to win wars. So, according to China's 2013 Defense White Paper, China's armed forces, the PLA, firmly believe that their military preparedness on winning local wars under the condition of information. So, basically, the side that can best gather and process information and prevent the enemy from doing so will be able to better detect and exploit operations on the battlefield and counter enemy operations. So, how is China gathering this information and denying it to their enemies? Well, China's space program has grown over the years, allowing it to develop and launch assets that have both offensive and defensive capabilities. Chinese satellites have reached low Earth, medium Earth, geosynchronous, and geostationary orbits, demonstrating their ability to cover every aspect. Today, China has satellites that can have both civil applications such as GPS, navigation, communications, and weather monitoring, and also military uses, as mentioned earlier, dual use, such as intelligence, surveillance, and reconnaissance, electronic warfare, fallout monitoring, killer satellites, early missile warning systems, and more, which we shall be looking a look now. While the exact number of military satellites is not known, and according to some sources, China has around 541 satellites in orbit as of April 2022. However, it is important to note that while there are numerous civilian entities involved in China's space program, the policy is almost entirely controlled by the PLA,
and many of its satellite and launch facilities are PLA launch sites. Therefore, it can be assumed that in a situation there's a conflict, the Chinese military can take over all of China's satellites. So these military satellites mainly come in four types. Yaogan, which as mentioned earlier. Yaogan satellites are used for ISR operations, which stands for intelligence, surveillance, and reconnaissance. And these provide the PLA with the ability to monitor developments across the world. These satellites are equipped with synthetic aperture radars and electro-optical sensors, high-resolution cameras, and electronic intelligence gathering technologies. These satellites help guide the PLA's missiles on the ground or from a ship to their target. The Yaogan series of satellites has been the backbone behind China's reconnaissance activities and have been key in implementing the area denial/access denial in the first and second island chains. These satellites are typically placed in low Earth or middle Earth orbits. Next, we have the Baidu Navigation Satellite System. The Baidu Navigation Satellite System, or BDS, is one of China's ambitious projects toward an alternative to the US operated GPS, as mentioned earlier. First launched in 2000, the BDS has grown since then to provide real time positioning and navigation services both to civilian and military users. The BDS has satellites typically in middle Earth orbit and geostationary orbits. The BDS has been extensively used by the PLA, integrating it into their precision based munitions such as ballistic and cruise missiles. Then we have the Tianlian series of satellites. These Tianlian series of satellites are also commonly known as Chinese Data Relay Communication Satellite Constellation. This constellation of satellites are communication satellites used by the military for secure communication and for the Chinese crew spaceflight program. The Tianlian series satellites operate in a geostationary orbit to ensure constant communication. A use case for the Tianlian series satellites for military purposes can be seen if you were to look back at the Chinese balloon incident that occurred earlier this year when a Chinese operated high altitude balloon was spotted in North America and was found to be equipped with all kinds of antennas and intelligence gathering sensors. How was it possible for the PLA to operate it all the way from mainland China? Well, it was through these communication satellites that the PLA were capable of transmitting and relaying signals from the Chinese mainland to the balloon in North America and on order to operate it. Then we have the Shijian series of satellites. Very little is known about the main purpose of the Shijian series, apart from the fact that they are used to test experimental technologies. For example, the Shijian 21 satellite, which was launched without any prior announcement in 2021, generated concern as it made some unusual movements in orbit. The satellite also demonstrated the ability to pull things out of orbit, as it did with a defunct Chinese satellite, removing it from its orbit and placing it in a graveyard orbit and then returning back. This feature generated concern among authorities as a sign that China was beginning to develop more on satellite technology and could pave the way for weapons being deployed in space. While China Yeah. does not rely solely on military satellites for achieving its space dream, it also uses other tactics to exert its power. For instance, it was recently reported that China plans to place 13,000 low Earth broadband satellites in order to rival SpaceX's Starlink satellites. This can have international effects when it comes to competing for satellite customers, infrastructure, space debris, and the use of low Earth orbit. There's also the Fengyun series of weather satellites. They provide meteorological services but also important to the military as a help and guide when it comes to launching ICBMs. ये बात ये है जो इन्होंने अभी बताया है कि ये जो स्पेस जो है ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी है और ड्यूअल यूज मीडियम है और ये जो स्पेस का जरिए इनका जो सिविल मिलिट्री फ्यूजन जो जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अलग इसमें ये सिविल मिलिट्री फ्यूजन को कहानी वो स्पेस के ऊपर बहुत लगाते हैं राइट अगर आप मान लीजिए ये जो चाइना और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर पाया गया और एक साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के ऊपर भी पाया गया क्यों लेके गए वहां एक तो उनका कंट्रोल होता ही है या ये बेडू नेविगेशन सिस्टम के जरिए या इनका टीएनजीएन के जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए ये सब पर किस लिए लेके गए वहां ताकि उनको मैप ग्रिडिंग और फिक्सेशन करने के लिए अगर ये तो कर लिया होगा इससे क्या जाहिर होता है कि अमेरिका के ऊपर इन्होंने मैप ग्रिडिंग कर लिया और वो ग्रिड जो है वो अपना मिसाइल्स के साथ जोड़ देते हैं जब वो मिसाइल्स के साथ जोड़ देते हैं जब आप चाइना से आप फायर करते हो मिसाइल वो आपके ग्रिड पर चलेगा ना कि इंटरनेशनल ग्रिड पर चलेगा इसका मतलब चाइना ने पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपना ग्रिड बना लिया और ये जो 4-5 किस्म के सैटेलाइट के जरिए वो अपना पूरा इंडिपेंडेंट हो रहे हैं इन स्पेस
और ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि हम तो नजदीकी हैं, तो हमारे ऊपर तो ग्रेडिंग हो ही गया होगा। और हमने पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले हमने साइनो इंडियन न्यूक्लियर डायनेमिक्स भी पढ़ा, बताया आपके बारे में जनरल PR कुमार के साथ। और हमने ये भी बात किया कि किस तरीके से मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप इसको पूरा देखोगे, ओवरऑल होलिस्टिक व्यू इफ यू टेक, this is something which we have to be very conscious about. And the kind of satellites which are they have put across, as what Gautam has said, is very, very threatening to India and to the world. Okay, yeah, carry on. So now that we have a brief understanding of China's military satellites and their uses, let us take a look at their counter space capabilities. As mentioned previously, with space now being considered a new high ground for China's information warfare, it is as important to deny enemies information as it is to gather it. According to a report prepared by the US China Economic and Security Review Commission, Chinese analysts offer various reasons to develop counter space technologies, such as to deny adversary the use of space, to protect Chinese space based assets from attack, and to prevent adversaries to use space for attacking Chinese territory, and to gain the ability to coerce and exert power over other countries. These counter space technologies are typically called ASAT technologies. ASAT stands for anti satellite. These anti satellite operations can either be kinetic or non kinetic. Kinetic ASAT operations are those that involve directly engaging physically, either through means of microsatellites, crashing into other satellites, and other weapons intending to remove the satellite from orbit. There have been reports that China is developing parasitic microsatellites from which they release from another satellite in orbit and made to crash into other satellites in orbit. These are relatively inexpensive but useful, as even a small piece of space debris can prove fatal to satellites. Then there are non kinetic operations, which refer to those that use means such as jamming satellite sensors or directed energy weapons or DEWs through the means of laser technology. These directed energy weapons are typically land based weapons, however, they can also be employed in space. These DEWs are used to either temporarily dazzle, blind, or even permanently destroy an asset. China's ASAT program has demonstrated the ability to develop both kinetic and non kinetic ASAT systems. It is one of the 4 countries in the world to have developed this capability, and it's part of a privileged few. So, to conclude, China's militarization of space revolves around their motive to gain an upper hand in space, as they believe it is the new high ground. The main objective being to gain as much information as possible regarding the adversary and deny as much information as possible. They believe achieving this gives the ground force a high advantage, and in some cases, they cripple the enemy before the conflict begins. So, China's aggressive development of space tech may impact the space program of other countries as they develop new strategies to navigate China's militarization. Thank you. बात इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से चाइना जो है, ये जो स्पेस प्रोग्राम जो अक्षय ने बताया है, और उसको कन्वर्ट करके मिलिट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेविगेशन किसके लिए चाहिए? नेविगेशन चाहिए इनके फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए और ऊपर से कंट्रोल करने के लिए। यूएवीज के लिए चाहिए, नियर स्पेस बलून्स के लिए चाहिए नेविगेशन, क्योंकि जहां भी आप अंतरिक्ष में या स्पेस में जाते हो या एटमॉस्फेयर में जाते हो, आपको नेविगेशन की जरूरत है। सिविल एयरलाइंस के लिए चाहिए नेविगेशन। तो नेविगेशन का इनका अल्टरनेट कंप्लीट सिस्टम हो गया, जिससे लड़ाई के वक्त इनको हम जैम नहीं कर सकते, इनको कहीं और घुमा नहीं सकते। और खास करके जो आजकल जो यूएवी हम ऑपरेट कर रहे हैं, अब देखिए अफगानिस्तान में जब यूएसए वालों ने यूएवी ऑपरेट किया, कहाँ से ऑपरेट किया? वो टेक ऑफ होते थे पाकिस्तान में, पर कंट्रोल कहाँ होते थे? वो फ्लोरिडा में कंट्रोल होते थे। उसी तरीके से चाइना में आज के दिन काबिलियत है, वो तिब्बत के ऊपर एक यूएवी उड़ाए हमारे एरिया के ऊपर, पर कंट्रोल होगा बीजिंग से। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से क्या है कि सैटकॉम के जरिए ये आप रिमोट कहीं भी दुनिया में आप कर सकते हो। और वो उसका जो इनका जितने जितने ये हायर ऑर्बिट यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो 78 सैटेलाइट्स जो अक्षय ने बताया है, उसके जरिए इन सबको कम्युनिकेशन बैकबोन मिल जाता है। लास्ट में ये जो डार्क सैटेलाइट्स के बारे में भी गौतम ने बताया, वो किलर सैटेलाइट्स हैं। वो किलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एक सैटेलाइट जाके दूसरे सैटेलाइट को टक्कर मार के गिरा सकता है। दूसरा, ये डैजलिंग के बारे में जिक्र किया। अगर आप एक वीडियो हमने किया था शुरू में चाइना सीरीज में,
राइट, जहां जनरल नरसिम्हन के साथ मैंने ये वीडियो किया था, उन्होंने बताया हवाई के ऊपर ये डैजलिंग का सिलसिला चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया और किसी को पता ही नहीं चला कि ये कहाँ से आया है। राइट, अगर आप नरसिम्हन साहब के साथ भी अगर आप मेरा वीडियो देखोगे इन कासा डायलॉग्स, आप ये है, मैं इसका लिंक दे दूंगा सबको, ये इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। इसके अलावा ये जो चीज अक्षय ने और गौतम ने बताया, इसके विस्तार रूप में हमने 4 वीडियो किया है जनरल राजीव नारायणन के साथ। एक ऊपर क्या स्पेस ऑपरेशंस के बारे में, एक नियर स्पेस ऑपरेशंस के बारे में, एक सैटेलाइट के बारे में, मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में, और एक एसेट ऑपरेशंस के बारे में। आप उनको भी देखिए, वो टेक्निकल है, वो बिल्कुल हिंदी में है। राइट, ये तो हमने देख लिया अभी चाइना कितना आगे बढ़ चुका है, कितना खतरा पोस करता है और कितना टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गया है। एक और बात मैं अभी बताना चाहता हूं, वो ये है कि हालांकि चाइना का अर्थव्यवस्था जूझ रहा है, प्रॉब्लम में है, वगैरह वगैरह, वो स्पेस में बहुत पैसा लगा रहा है। उससे क्या हो जाता है कि इसका क्षमता बढ़ जाता है, इसीलिए वो आज तक वो सुपर पावर का काप देख रहे हैं। और बात ये है, हमारा क्या नजरिया है, हमारे ऊपर क्या असर होगा और हम क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ जीजी जो सलामेरिस के स्टूडेंट हैं और चाइना सेंटर में अपना चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज में रिसर्च कर रहे हैं, वो अभी बताएंगे। या ओवर टू यू एलिजाबेथ, ऑल योर स्लाइड्स आर हियर। Thank you, sir. या Good evening, everyone. So, building on what my fellow panelists, both Akshaya and Gautam, covered before me, I will be taking a glance into the Indian perspective of the China space program, and I will explore the following 3 avenues. The first one is the effect of China's space program on India. Second one is India's current and potential actions it can take. And third one is India's very own space program. So, next slide. Okay, so first we have the effect of China's program on India. So as you can see, we have 5 main impacts. The first one is strategic concerns. So China's space militarization, it poses ton of strategic concerns for India. The development and the deployment of ASAT weapons. For example, there was a demonstration of a direct ascent ASAT capability in 2007. It managed to destroy one of their own satellites, and this raises a lot of concerns for India's satellites and space assets because this could be potentially disrupted or targeted in the future conflicts. The second form is space race and regional dynamics. So China has tons of advancements in space technology, and this can intensify the space race between the countries. So India definitely, as you all know, has its own very strong space program, including the Indian Space Research Organization and its missions to Mars and the Moon, which I will be covering later. So this space rate and the regional dynamics, it could influence India's strategic calculus, and it could lead to an acceleration of India's own space capabilities. Then we have surveillance and reconnaissance. So this has a lot of implications for India's national security. This is because advanced satellite systems, they can gather intelligence, monitor military activities, and track the movement of forces. So it provides the Chinese military with basically an enhanced situational awareness of the entire region in India. The last one, no, the fourth one is communication and navigation. So the BDS satellite navigation system, as covered before, it has both enhanced communication and navigation capabilities, and it is utilized for civilian and military purposes. So what India needs to do is to ensure the resilience and security of its own communication and navigation infrastructure. Then finally, we have the diplomatic and geopolitical implications. The outstanding effect of this is that it could broaden the diplomatic and geopolitical implications for India. It can lead to an increase in tension and competition between the two countries, both in space and on Earth. And the regional dynamics and the relationships with the other countries
can also be influenced as a result of this. Overall, it's key to note that India relies heavily on space based assets for communication, navigation, weather forecasting, disaster management, and military operations. So, any disruption or destruction of these assets would have severe implications for India's defense and civilian infrastructure. So, next slide. Okay. So the actions by India that India has been taking and India could substantially improve as well. The first one is counter space abilities. It could act as a deterrent against potential threats. Second one is strengthening space capabilities. It can be branched into two. One is investment and the other one is development. When it comes to investment, we can talk about investment in satellite technology, investment in communication and navigation systems, and development of surveillance and reconnaissance. And we have international cooperation and collaboration with other countries to the form of joint research. We have diplomacy, diplomatic dialogues with China through both bilateral and multilateral forums. And Yeah, such as the yeah, United Nations, where India has a platform to voice its concerns or voice its any concern based yeah. Just switch off your video for a minute, Elizabeth. Then you'll come through. Your bandwidth is low. Yeah. Now speak. Yeah. So, Yeah. the Carry next on. slide. Yeah. I Next would like slide. the next. Okay. Yes. So now, when we talk about India's own space program, there's a lot to say. So India's space program, it is primarily managed by the ISRO. It was founded on August 15th, 1969. It has achieved significant milestones and advancements in space technology, with an annual budget that's approximated to be around rupees 10,000 crore, according to the Economic Times. ISRO covers various aspects of space exploration, satellite development, launch vehicle technology, and scientific research. There are a few key achievements when it comes to India's space program. The first one is the successful launch of the Mars Orbiter mission in 2013, also known as a Mangalyaan. It makes India the first Asian country to reach Mars and the fourth in the world to reach Mars. It was a very cost effective mission. What it basically did is that it demonstrated India's capabilities in interplanetary mission, and it showcased its technological prowess and ability to achieve significant milestones. And then we have in 2019 the Chandrayaan 2 mission, which aim to explore the lunar surface. India has a program on the way. It's called the Gaganyaan program. It's under the Indian Human Spaceflight Program. It aims to send Indian astronauts to space by 2022. It also demonstrates India's growing capabilities in the human spaceflight. In addition to the Satish Dhawan Space Center, which is formerly known as Sriharikota, Kulashekara Patnam's spaceport is the second launch pad that's currently being built in India. It's ISRO's second spaceport. And Sriharikota had many successful launches. Its first one was an RH-125 sounding rocket in 1971, and it is also the location for the launch of the Gaganyaan spacecraft. And space has no longer something is no longer something that's solely under the control of the government domain. It's witnessed a lot of privatization, especially in the recent years. So there's been an increasing involvement of the private sector in various aspects of the country's space sector, including the satellite manufacturing and launch services and space application. There have been several policy initiatives and establishment of entities like New Space India Limited by the Indian government. It encourages and regulates private sector participation. And as a result, there has been an emergence of space startups and entrepreneurs, and it has led to a lot of innovation, investment, and technological advancement.
India has also worked on its counter space capabilities, as mentioned earlier. It has conducted a successful ASAT test in 2019, and it has exhibited its prowess in or its ability to destroy low orbit satellites. And in terms of strengthening space capabilities, we have the Space Situational Awareness System to monitor and track objects in space, which can identify the hostile objects and can basically enables the early detection of any hostile actions or threats. India has also had several collaborations and partnerships internationally with other countries. They such as sharing space-related data and information with other countries to enhance the global efforts in maintaining space security and stability. So the most common or the most popular ones are the collaborations with USA and with Russia. So with USA, the NASA and ISRO have seen collaboration in terms of the Mars Orbiter mission in 2013, as mentioned, and the NASA ISRO synthetic aperture radar. It started in 2019 to co-develop and launch a dual frequency synthetic aperture radar on an Earth observation satellite. And then we have with Russia, the Soviet Union Soyuz T-11 mission in 1984, which made Rakesh Sharma the first ever Indian to go to space. India also does have collaborations with France, Japan, and Australia. Finally, India has expressed its intention to explore deep space missions and planetary exploration. It's showcased its commitment to scientific advancements and technological invention in space. And most recently, the Chief of Defense Staff, General Anil Chauhan, he has said, and I quote, the military application of space is the dominant discourse from which we cannot remain divorced, and it is important for India to focus on incorporating new technology into the space industry. Unquote. This was reported by the Indian Express, and it basically shows that India has only one way to go, and that is upwards in terms of developing its space capabilities. Thank you, sir. Yeah. Uh, Thanks a lot. You spoke very well, एलिजाबेथ. आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है हमारे ऊपर क्या होगा, हमारे ऊपर क्या असर होगा, और आपने ये भी बताया कि हमारा स्पेस प्रोग्राम कितना आगे बढ़ गया, राइट? हम चौथा देश हैं जो लूनर ऑर्बिटर और मार्स ऑर्बिटर हमने भेजा है। मार्स लूनर लैंडिंग हमने ट्राई किया चंद्रयान पे, वो हुआ नहीं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्पेस में फेलियर अमूमन होता है, हर देश में फेलियर हुआ है। अगर आपको याद है तो अपोलो 13 फट गया था, जिसमें सारे लोग मर भी गए थे, वो जब चांद के ऊपर जा रहा था, और ये 670s की बात है। तो ये होता है, पर हमारा जो खास बात ये है कि हमारा जो स्पेस डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिजिनस है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं। और एक और खास बात है, हम हमारा जो स्पेस का प्रोग्राम है, हमारा स्पेस में जो भी डेवलपमेंट है, रिसर्च वगैरह, हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को लेके आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज को लेके आ रहे हैं। और हमारा जो स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, दुनिया में माना जाता है सबसे किफायती है, सबसे सस्ता है और मजबूत है, दोनों, राइट? इसीलिए बहुत लोग आजकल हमारे लॉन्च इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अपना सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमें इसमें आमदनी भी मिलेगा, क्योंकि लॉन्च के लिए हमें पैसा मिलता है और उसके साथ साथ सैटेलाइट्स को मेंटेन करने के लिए भी पैसा मिलता है। अगर कल के दिन हम स्पेस में ये स्पेस सर्विसेज शुरू करेंगे तो स्टार्टअप्स के जरिए ये हो रहा है, ये हम स्पेस पावर बनने का बहुत चांसेस हैं। ये मत सोचिए क्योंकि चाइना का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ गया, हम पीछे हैं। हम पीछे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हम किसी से कम भी नहीं है, राइट? और ये भी सोचना ठीक नहीं होगा कि स्पेस के जरिए चाइना सब कुछ कर सकता है, क्योंकि स्पेस मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस उस जगह तक नहीं पहुंचा है जहां हम पूरा स्पेस से हम लड़ सकते हैं, राइट? तो उतना डरने की बात भी नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है कि उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा स्पेस प्रोग्राम बढ़ रहा है, हमारा डिफेंस स्पेस एजेंसी खुल गया है, और राइट, और मेरे को खुद पता है
अगर आपको मैं बताऊं तो 1988 की बात है, जब मैं पृथ्वी प्रोग्राम में था और ये श्रीहरिकोटा में जाके हम 4 महीने रहे थे जब उसको लॉन्च करने के लिए, फर्स्ट और सेकंड फ्लाइट के लिए। और उन दिनों में ये सतीश धवन स्पेस सेंटर नहीं था, उसका नाम श्रीहरिकोटा स्पेस लॉन्च सेंटर था। और उन दिनों में हमारा पहले जीएसएलवी का प्लानिंग हो रहा था और पीएसएलवी का प्लानिंग हो रहा था, हमने चलाया नहीं। तब से अगर मैं 88 से लेकर अभी 2023 तक देखूं तो ये तकरीबन 40 साल का जो रास्ता है, जो टाइम बीता है, हम बहुत पहुंच गए आगे। और इनफैक्ट एक और पर्सनल चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले साल मैं श्रीहरिकोटा में गया था, तो ये जो पहला लॉन्च स्टेशन पृथ्वी का, जहां मैं गया था, मैंने देखा यार, मैं तो यहाँ था जब मैं एक सिर्फ मेजर था, अभी तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आके देख रहा हूँ। और वो म्यूजियम बन गया आज के दिन। वहाँ कुछ नहीं होता, म्यूजियम है। सब जो भी पर्यटक वहां जाते हैं उनको दिखाते हैं यहाँ पृथ्वी का फर्स्ट लॉन्च हुआ। और मेरे को भी थोड़ा फक्र हुआ था कि मेरे उसमें मैं थोड़ा शरीक था। राइट। अभी क्या है कि हर बार जैसे चाइना के बारे में जब भी हम बात करते हैं, मैं ये सिलसिला शुरू किया जल्दी फाई का, जहां हम देखेंगे कि उनकी तरफ से क्या है, चाइना कैसे सोचती है चाइना अपना स्पेस प्रोग्राम के बारे में। हम ये जल्दी फाई में देखेंगे चंद मिनट में, और उसके बाद सवाल जवाब लेंगे। सबसे पहले चाइना का ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये जाहिर हुआ है कि चाइना हैज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल। और ये विंड टनल जो फोटो भी दिखाया है, इस ये जरूरी है क्योंकि कोई भी चीज डिजाइन करने के लिए एक विंड टनल की जरूरत होती है। विंड टनल कुछ नहीं है, उसके सामने हवा ब्लो करते हैं एक हाई प्रेशराइज हाई स्पीड में, और उसको डिफरेंट एंगल से लगाते हैं जो आपका स्पेस क्राफ्ट या मिसाइल के ऊपर, ताकि इसको हमें पता चले कि इसको किसका डिजाइन सही है कि नहीं। और इसमें क्या है, ये सिमुलेट कर रहे हैं 30 मैक कंडीशन। आजकल 8-9 मैक से ज्यादा कोई स्पेस शटल गया ही नहीं। ये हाई स्पीड जो है अंतरिक्ष में पाया जाता है, और ये 30 मैक ट्राई कर रहे हैं, वो देखते हैं कहाँ तक ये पहुंच पाएंगे। राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे ये पहले भी जिक्र किया गया था, चाइना एम्स टू लॉन्च nearly 13,000 सैटेलाइट्स टू सप्रेस एलोन मस्क स्टारलिंक्स। ये करना चाहते हैं, अभी है ही नहीं, ये शुरू करना चाहते हैं। और ये सोचते हैं कि 2035-30 तक ये हो पाएगा। क्या ये हो पाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। क्या चाइना के पास उतना पैसा रह जाएगा, क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था जो है बड़ा ढीला है। पर अगर Xi Jinping is successful to leverage technology to turn the whole thing, then this will be a problem. They want to dwarf the Elon Musk's Starlink program. They want to put these 13,000 satellites in a higher orbit than Elon Musk's Starlink orbit. बट दिस इज ऑल थिंग्स टू कम। ये देखने वाली बात है, क्योंकि काफी हद तक चाइना से जो आता है वो प्रोपेगेंडा भी होता है। तीसरी बात है, अगर इतने इन्होंने 13,000 सैटेलाइट वहां लगाना है तो उनको लॉन्च करने की क्षमता भी चाहिए। दैट इज वाई चाइना इज सुपरसाइजिंग इट्स रॉकेट इंडस्ट्री एंड इट्स कमिंग आफ्टर स्टारलिंक। ये बोलते हैं कि इट विल नियरली डबल द लॉन्च कैपेबिलिटी। अगर आप, ये तो अच्छी बात है, बोलने वाली बात है, हम भी तो यही कर रहे हैं। अगर हम ट्यूटिकोरिन के पास जो एलिजाबेथ ने बताया कि एक और लॉन्च स्टेशन हम खड़ा कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। और जो चाइना वाले कर रहे हैं, चाइना वाले कोई अद्भुत चीज नहीं कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये है उनका स्केल ज्यादा है, आजकल बोल ज्यादा रहे। क्या वो कर पाएंगे, नहीं, वो देखने वाली बात है। ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चाइना's मून ambitions टेक शेप विद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड मैप फॉर रिसर्च स्टेशन। उन्होंने एक रिसर्च स्टेशन जिसका आकार और दृश्य यहाँ दर्शाया गया है, वो ट्राई कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये गौतम ने और अक्षय ने भी बताया कि वो रिसर्च स्टेशन वहां लगाना चाहते हैं। क्यों रिसर्च स्टेशन करेंगे? वो लूनार माइनिंग करेंगे। माइनिंग का मतलब क्या है कि वहां का मिट्टी लेंगे और उसमें से पानी निकालेंगे। पानी निकल गया तो आपको एनर्जी मिल गया, क्योंकि H2O जो पानी के अंदर है उसको फाड़ दो तो हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन से आपको फ्यूल सेल मिलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो तो आपको फ्यूल सेल का बेस जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आपको एनर्जी मिलेगा। अगर आपको एनर्जी मिलेगा तो आप कहीं और जा सकते हो। सोच ये है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कि मून विल बी द बेस फॉर
रिसर्च इनटू डीप स्पेस, और ये इसमें चाइना जो है काफी आगे चल चुका है, राइट। और लास्ट ये है कि इसका जो मार्स रोवर जो इन्होंने छोड़ा है, वो बोलते हैं कि वहां पानी पाया गया है। अगर पानी पाया गया है मार्स के अंदर तो इनको तो ये फिर तो बोलिए बहुत कुछ हो सकता है, कि क्योंकि वहां निवासी भी रह सकते हैं। इनका प्लान है कि अगले 20-25 साल के बाद एक कोई मैन्ड मार मिशन टू मार्स भेज सकते हैं। देखते हैं कि होगा कि नहीं, क्योंकि अगर पानी वहां मिल गया, हीलियम मिल गया, तो आपका पूरा दुनिया का एनर्जी इक्वेशन बदली हो जाएगा। अगर किसी देश ने इसमें ब्रेक थ्रू पा लिया तो वो पक्का सुपर पावर बन ही जाएगा। इसीलिए चाइना इज टेकिंग द ग्रेट रिस्क। तो ये हुआ ये आज के जल्दी फाइट। अभी हम आप सबसे सवाल जवाब लेंगे, राइट। एंड आई हैव फिनिश्ड विद माय जल्दी फाइट। ओके, सबसे पहले कुछ कमेंट लेंगे। Vishwanathan says, congratulations to the three youngsters for an impeccable presentation. Yes, I also congratulate all three of you. You gave some fantastic presentation. It's very good. ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये साइंस के स्टूडेंट्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी जानते नहीं है, ये इंटरनेशनल के स्टूडेंट्स हैं। और इसके बावजूद मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। और सुनील का मानना यह है कि थैंक यू जनरल फॉर मोटिवेटिंग यंग माइंड्स टू कीप एन आई ऑन चाइना। जस्ट टू थ्रिल्ड टू सी द वे these young Turks are detailing the information. Hand pink waving and hand pink waving. Thank you सुनील for motivating them. क्योंकि जब तक हमारा अगला पीढ़ी चाइना के बारे में नहीं सोच सकता, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, हम उनके ऊपर हावी नहीं होंगे, वो हमारे ऊपर हावी होंगे, राइट। इसीलिए मैंने ये यंग रिसर्चर्स को हम ले आए, क्योंकि इनको भी मौका मिलना चाहिए हर जगह बात करने के लिए, राइट। अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम ही होगा। ओके, ओके, अभी 2-4 सवाल लेंगे हम, और उसके बाद राइट। या तरुण कुंडानी ने बोला था, गुड इवनिंग टू द एस्टीम पैनल। गुड इवनिंग तरुण, थैंक्स अ लॉट। ओके, okay. Question from Death Parade. How will we manage to combat Chinese co-orbital killer satellites? India's space situational awareness is limited by our geography. We need space-based SSA. Yeah, Gautam, can you take it on? Let me think. So, from what I've read so far, India is just now beginning to increase its awareness about space-based operations. So I think it's more of something that we're beginning actually coming to, and I'm pretty sure we'll see something in near time. I cannot exactly say what we Okay, must no do now. problem. Yeah. Now I'll put it in picture. See, China really doesn't have co-orbital killer satellites in great number, and you have to do it very carefully. जैसे मेरे ख्याल में अक्षय या गौतम ने ही बताया, जब आप स्पेस में किसी चीज को तोड़ देते हो, इट गोज एट अराउंड 712 kilometers per hour. That is very lethal. If it hits any other object, right, it will destroy that object. And then you will have so many things coming out, so much space debris coming out, which is also traveling at that speed. Right? This entire thing of space debris and how it happens and how it affects space stations and everything. आप एक पिक्चर देखिए ग्रेविटी, जिसका हीरोइन है सेंड्रा बुलक, और उसमें एक वो आई एम फॉरगेटिंग द हीरो ऑफ द जो है, उसमें देखिए एक स्पेस डेब्री जो है स्पेस स्टेशन को मार देता है, और वो किस तरीके से वो स्पेस स्टेशन घायल हो जाता है। जैसे 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 ये स्पेस में ज्यादा सैटेलाइट्स हो जाते हैं, उतना मुश्किल हो जाता है किसी को मारने के लिए। तो ये जो को ऑर्बिटल किलर सैटेलाइट्स वगैरह बोलने के लिए आसान है, उतना आसान नहीं है एक्चुअली फायर करने के लिए। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप जाके गना शॉट के अंदर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस सेंचुरी का प्लेलिस्ट निकालिए। उस प्लेलिस्ट में 4 वीडियो मैंने बनाया, एसैट ऑपरेशन, नियर स्पेस ऑपरेशन, डीप स्पेस ऑपरेशन, सैटेलाइट्स और मिलिट्री स्पेस ऑपरेशंस के बारे में 4 ये। और एक जो मैंने वीडियो बनाया है जनरल नरसिम्हन के साथ, पहला वीडियो है कासा डायलॉग्स में ऑन चाइना सीरीज, राइट। उसमें भी देखिए कि किस तरीके से इन्होंने व्हाट इज चाइना अचीव्ड इन स्पेस। अगर ये 5 वीडियो देखेंगे, फिर आप ये जो लड़के और लड़कियां
बोले हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि उतना आसान नहीं है कि स्पेस को मिलिटराइज करना और ये करना। अभी काफी बोल रहे हैं, और मेरे खुद का अंदाज ये है कि कम्युनिकेशंस में और नेविगेशन में काफी आगे बढ़ चुके हैं, पर स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम्स उतना ये नहीं है। अगर किसी देश का इसमें दे हैव इट इज विद यूएसए। चाइना इज स्टिल वन स्टेप बिहाइंड। चाइना में ज्यादा बोल हो रहा है और ज्यादा बेटिंग हो रहा है स्पेस के ऊपर, राइट? ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सैम शाह। Is there a program regarding asteroid mining in India, whether elements like lithium or potassium are present in asteroid? Is there any research regarding this? Anyone knows? You want to take on, or you want me to take on? Okay, okay. There's no, uh, there is no program for asteroid mining. Asteroid mining is still in very nascent stage all over the world. What elements you'll find in an asteroid, you don't know. आज के दिन किसको पता है कि किस एस्ट्रॉइड के ऊपर पोटेशियम है या लिथियम है? जब तक आप उस एस्ट्रॉइड के ऊपर नहीं जाके लैंड करोगे और उस एस्ट्रॉइड को माइन नहीं करोगे, ये नहीं होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि एस्ट्रॉइड माइनिंग करना है, पर क्या ये हो पाएगा कि नहीं, ये स्टिल इन द realm of possibility or probability. I will not say it is possible as of now. I mean, it is possible, but I don't know whether it is feasible, right? Okay. What are the other questions? A lot of comments, yes, but I don't see is any question. Yeah. Let me take this. Sir, Mach 330 is probably to simulate HGVs, although it should be Mach 20. Now I think about it. See, anything above Mach 10 is a hyperglide vehicle. Okay, hypersonic glide vehicle. You need Mach 30 for space programs, basically, right? You'll get a better idea of space programs and controlling satellites and space debris through a Mach 30 thing. बट दिस इज ऑल, ये तो बोलने वाली बात है। ये पहली बार मैंने देखा है कि एक कोई रिपोर्ट आया कि अबाउट हाइपरसोनिक विंड टनल ऑफ मैक 30। अब देखते हैं। ओके, नेक्स्ट शानू मिश्रा। सर, what are we doing in near space and progress on HAL CAT pseudo satellite system? Why cyber command is separate from space command? Because both are part of network operations and DWs. देखिए, ये हम कुछ कर रहे हैं स्पेस, नियर स्पेस के बारे में। एक न्यू स्पेस इंडिया है, जो एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर का कंपनी है। वो नियर स्पेस के बारे में, नियर स्पेस सिस्टम्स को बना रहा है, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है आपको बताने के लिए, राइट? अभी जो है, क्या ये साइबर कमांड हुआ, स्पेस कमांड हुआ, ये सब दे आर ऑन द फॉर्मेटिव स्टेजेस। वी हैव नॉट कम टू दैट लेवल वेयर वी आर, और आइडियाज आर क्लियर, राइट? हो सकता है 2-3 साल के बाद या 4 साल के बाद ये आइडियाज जब क्लियर हो जाएंगे, ये सब सेटल हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस टेक टाइम टू मैच्योर। जहां तक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है, वो भी नेसेंट है। सब बोलते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, right? But directed energy weapons have problems. Because why? Let me explain to you. First, for directed energy weapons, you need energy. And energy is limited in space. Energy is what you can carry on that platform, right? Unless you can accumulate energy, you can't power that and fire it, right? So there's a problem in this directed energy weapons being fired from space. And the second thing is, so far, we have not had any concrete evidence of DEWs being used. They're still in experimental stage. There's a long way to go. So there's no point in discussing about it at this point of time. Okay. Right. Okay. Right. I don't see any more questions. There's a lot of comments. And I thank all of you for all your comments. And I thank you all for, motivating the panel. I personally think Akshay, Gautam, and Elizabeth have done a lot of research, and they have had the courage to come and face all of you, right? And so many people will be seeing and all that, which is a great thing. I congratulate all three of you. You must motivate your friends to come and talk,
Because unless you talk, you don't know how to research. And I'm sure in the course of this talk and this panel, you would have realized many things which you probably didn't know earlier, Definitely, right? sir. And Yes. it's very great that you have taken this great step, not being without a science background, coming into this and talking about technology and something new and handling your portions very well. It's very good. It gives me great confidence in all of you. So go back, tell your friends, show this video to all your friends, and say you've done a great achievement, right? And Yes. I'm sure you'll do well. We'll keep meeting in Chennai Center for China Studies, because I keep coming and speaking in all the events and all that. And we will keep interacting. Thanks a lot. Thanks a lot to all the audience who are seeing it, and those who see it tomorrow, day after, and down the line. I would request all of you to please share this video with all your friends. Also, please subscribe to Ghana Shot and tell everyone, tell your young people to see. Unless young people like these three uh, research and speak and express themselves about China, we will not know enough of China. And unless we know enough of China, we will not rise. Thank you. Good evening and Jai Hind. Jai Thank you, Hind to sir. all three of you. Well done once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Good evening. Thank you, sir.